भाई हम भी खतरों के खिलाड़ी बने। भाई साहब तुम्हारी बहन कहाँ पहुँच गई है? मैंने वोडका पिए तो look at this winter wonderland, guys. I am freezing because it's like -8. We made it through. I know it's fucking cold. थक गए। क्या ठंड है यार। Good morning, how are you? And today I'm going on a tour. So I'm all ready, hoping ठंड नहीं लगेगी। और अभी टेम्परेचर हो रहा है -2 तिब्लिसी में, तो काज़बेगी में तो ठंड होगी। मैंने फिर भी भाई एक और लेयर पहन ली है और एक है ही ये, होपफुली मुझे ठंड ना लगे। पूरा पैक होके तो निकल रही हूँ। सो कहीं ना कहीं से कैश का जुगाड़ करके आई फाइनली बुक द काज़बेकी टूर एंड आवर फर्स्ट स्टॉप ऑफ द डे वाज द जिनवाली रिजर्वॉयर। ये एक मैन मेड वाटर सप्लाई है फॉर तिब्लिसी एंड नियर बाय रीजन। यहाँ का टर्कोइस ब्लू वाटर सराउंडेड बाय माउंटेन्स क्रिएट्स अ ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप। कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन के टाइम द 12th century चर्च ऑफ द क्रॉस वाज फ्लडेड एंड रिमेन्ड सबमर्ज्ड। फॉर 6 months of the year, the ruins of the church can be seen standing on the lake bed, while for the other 6 months they remain underwater as the lake's water level changes throughout the year. Ananuri complex is a significant monument of Georgian architecture which is located on the shores of the reservoir. And वही हमारा next stop है. So Ananuri was a castle and home to the Dukes of Aragvi, जिन्होंने ये area rule किया from the 13th century. It was built to protect the Aragvi river valley and the trade routes between Georgia and Russia. Fortress में काफी सारी buildings हैं and it has seen many battles over the years. But somehow many of these buildings have survived. And from here, you also get a beautiful view of the Jinvali Dam. Don't have much time, but जितना टाइम है उतना एक्सप्लोर करके भाग जाएंगे फटाफट। जाके आना है भाई मेरे को तो। भाई हम भी खतरों के खिलाड़ी बने। 10 मिनट है हमारे पास। ओए होए, यही चीज़ें करने में तो फन है भाई। ऑलराइट, खाना मेरे थ्रू। भाई साहब तुम्हारी बहन कहाँ पहुँच गई है? बस हाथ ठंडे हो रहे हैं, वैसे इतनी ठंड नहीं है भाई। अब आगे बढ़ने से पहले it was a must to try Georgian honey and locally made vodka Chacha. Georgia has a long history of beekeeping, producing pure organic honey from high altitude mountain flowers. And we got to try some unique honey varieties here. Honeycomb. If it's not showing honeycomb, it's not real honey. And it's और चाचा जॉर्जिया का ट्रेडिशनल ग्रेप वोडका है, जिसे जॉर्जियन ब्रांडी भी कहा जाता है। It comes in different varieties and is commonly offered as a welcome drink by local. अब हमारा अगला स्टॉप था द रशिया जॉर्जिया फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट इन गोदावरी। ये मॉन्यूमेंट बिल्ड किया गया था टू मार्क द 200th anniversary of the Treaty of Georgievsk, which created an alliance between Georgia and the Russian Empire. इसका डिजाइन 2 पार्ट्स में स्प्लिट है। The left side shows scenes from Georgian history and traditions, and the right side represents Russian history and achievements. And in the middle, there's a picture of a mother and a child, which symbolizes unity, protection, the connection and dependence between the two nations during the Soviet era. And as you know, because of Georgia's complicated relationship with Russia right now, people have mixed feeling about this monument. But the monument offers one of the most beautiful views in Georgia. And I don't know if you can see it, but snowfall हो रही है थोड़ी थोड़ी। Finally gloves काम आ गए, क्योंकि हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। अब
मैंने वोडका पिए तो आई गेस नीचे चलते हैं भाई। फ्रेंडशिप का सिंबल तो देख लिया मैंने। प्लीज हिमांशी, फॉर गॉड सेक गिर मत जाना, बाकी सब ठीक है, बिकॉज आई नो इट डज फील लाइक एन ऑसम टाइम टू बी हियर। चलो भाई नीचे चलते हैं, कोशिश करते हैं। द थिंग इज आई फील अ लिटिल बिट ड्रंक, बट भाई अभी तो पूरा ट्रिप बाकी है यार। Himachi, learn from your lessons, girl. Oh my god. Look. Look at this winter wonderland, guys. Oh my god. Guys, do you see sunshine? A little bit of sunshine. Anyway, let's go back. Honestly, I have no idea what the temperature is, but as long as I don't feel cold, I'm not checking it. But last time जब मैंने सुबह चेक किया था -11 या 12 था, तो होगा कुछ -5, -7. I don't know. It's just a guess. The only thing is कि मेरे होश वापस ले आओ भाई मुझे, क्योंकि ड्रंक फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा। और कमाल वाली बात है कि अपनी पिछली मिस्टेक से जब मैंने वाइन पी थी उससे नहीं समझा। क्रेजी मी, बट डूड लुक एट दिस। ओह इनसेन। क्योंकि बहुत ठंड है तो यार बैटरी बहुत जल्दी जा रही है, बट आई थिंक वी आर गोना मेक इट टू कसबेकी टुडे। हाथों की लग गई है, पैरों की लग गई है, but it's super fun bro. तो आज का हमारा आखिरी स्टॉप था द गरगेती ट्रिनिटी चर्च इन स्टेपेंसमिंदा, which is set against the breathtaking backdrop of Mount Kazbek. भाई यहाँ लग रही है ठंड सच में, और टेम्परेचर कुछ जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था -7 हो रहा था। बट व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी। So to reach the top, we took a 4x4 jeep ride. This church was built in the 14th century और इसकी लोकेशन इतनी रिमोट और आइसोलेटेड है कि ड्यूरिंग फॉरेन इन्वेजन्स important religious treasures from Mashketa, जो कि जॉर्जिया का ओल्ड कैपिटल था, were kept here for protection and safety. I am freezing because it's like -8 और बहुत हवाएं चल रही हैं दोस्तों। Okay, no doubt the views were absolutely stunning, but it was freezing cold. The temperature dropped to -11 degrees. Plus, the strong winds made it feel even more colder. But since we had come so far, we had to go ahead and check out the church. So, हमने अपनी सारी courage gather करी and we started moving forward. गिव अप हो गया भाई मेरा। ओह, इससे पहले और ठंड लगे। We made it through. I know it's fucking cold, but we made it through. थक गए और क्या, ठंड है यार। चलो व्यू तो एटलीस्ट। ब्रो माँ कसम बहुत ठंड है, बट हम ऊपर तक होके आए, सो परफेक्ट। अब हम नीचे चलते हैं और अपनी ट्रिप को फाइनली फिनिश करते हैं। गिव अप। Well, somehow we all managed to survive the freezing cold and made it back to the car. I was super tired and absolutely freezing, but
Anyway, that's it for the day. Thanks for watching. See you in the next video.